So Hmm. in the first night we started, and this entry started firing. At that time, firing started. It was a heavy fire. One of my guys was injured in the very first instance. Other things. So when we searched the area at the end of firing, we realized that it was a huge camp. With roughly 100 to 120 Naxals were camping there. हाय गाइस, कैसे आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज हमारे साथ है बहुत ही अमेजिंग एक इंसिडेंट। आप कुछ लोगों के साथ मैंने शेयर किया था मेरे चैनल पर, जहां पे मैंने बताया था कि मेरा बैचमेट है सौम्य मुंडे, जिनको जो बेसिकली अभी इंडियन पुलिस सर्विसेज के अंदर हैं और जिन्हें रिसेंटली शौर्य चक्र से नवाजा गया है बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। सो आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग उनकी जो जर्नी है उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट, सेकेंड, being IIT Bombay graduate, how did he ended up in civil services? How did he prepare for it? थोड़ा बहुत इसके बारे में जानेंगे एंड देन उस इंसिडेंट के बारे में which actually resulted in this amazing award and it's an honor to share screen with Soumya, right? मतलब हम लोग IIT में साथ में थे, so like we always known each other as one sports person to another. ठीक है, मैं भी थोड़ा बहुत खेलता था and he used to play hockey. So welcome Soumya. Thank you, Prashant. Nice talking to you after a long time, Yeah. and it's always a pleasure. परफेक्ट। सो यार मैं थोड़ा सा ऑडियंस का डेमोग्राफिक क्लियर कर देता हूँ एक बार कि यूजुअली जो 11th 12th क्लास के जो बच्चे होते हैं जो आईआईटी की तैयारी करते हैं, कुछ बच्चे नीट की तैयारी भी करते हैं, तो और थोड़े 9th 10th के बच्चे जो सोचते हैं कि आईआईटी की तैयारी करेंगे, वो बच्चे बेसिकली इस पॉडकास्ट को सुनेंगे। माई इंटेंट इज टू इंस्पायर देम, राइट, बाय योर स्टोरी। And in our previous videos we have covered careers related to like after IIT but लोग क्या क्या करते हैं। For example, Neeraj has talked about the startups and Aditi has talked about MBA. Hemant Noval, he has talked about like jobs in US, right? So we will be covering the civil services aspect here. So सबसे पहले like first thing first, right? सब बच्चों को ये जानना होता है कि यार IITian है, ठीक है सौम्य। सो लाइक व्हाट इज योर आईआईटी जेई स्टोरी, मतलब प्रिपरेशन स्टोरी, वेयर डिड यू प्रिपेयर, सो लाइक व्हाट इज योर बैकग्राउंड एंड ऑल दीज थिंग्स। Yeah, so part of I did my schooling from Sainik School Satara and from Rashtriya Indian Military College in Dehradun. तो आई ऑलवेज स्टडीड इन मिलिट्री स्कूल्स और मुझे हमेशा वही था कि यूनिफॉर्म पहनना है अगर आप। आई इवेंचुअली एंडेड अप नॉट joining NDA because I failed in the medicals and उसके बाद then I was clueless कि भाई करना क्या है। In my military school, the practice was that they used to conduct a medical test in 10th class before you go for NDA preparations, so that पता लग जाए कि भाई बंदा actually fit है कि नहीं। At that time I found out that I have specs and everything. तो फिर छोड़ दिया, मैंने स्कूल छोड़ दिया and I was completely clueless कि भाई करना क्या है लाइफ में। I come from a family of doctors, so one of the options was obviously going into medical stream. लेकिन बायोलॉजी कभी जमी नहीं थी, मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट था। At that time, one of my my best friend, in fact, Vishu Mahajan, he also had landed up in IIT Bombay. At that time, when we were in 10th, his brother had topped IIT JEE. Raghu Mahajan, Raghu Mahajan. yes. Yes, I yes, remember yes. Yeah. 2006. So yeah. So Vishu is also from same school. He also studied in Dehradun. तो उसने बताया मुझे कि भाई ऐसे ऐसे मेरे भाई ने एग्जाम क्लियर किए, बहुत बढ़िया एग्जाम है, तो अपन भी थोड़ा ट्राई कर लेते हैं। तो फिर मैंने सोचना स्टार्ट कर दिया क्या करना है क्या नहीं करना है। एट दैट टाइम माय प्लेस इज मच क्लोजर टू हैदराबाद। सो देन आई वेंट टू हैदराबाद। माय पेरेंट्स फाउंड आउट कि भाई कैसे करना है, क्या कहाँ का कोचिंग मिल सकती है। एट दैट टाइम वी फाउंड आउट अबाउट इंस्टीट्यूट कॉल्ड रामैया इंस्टीट्यूट इन हैदराबाद। तो फिर उसका उसका फिर थोड़ा सा प्रिपरेशन किया, एंट्रेंस दिया, क्लियर हो गया उसमें। और फिर वहां से फिर हम एक बार वो घुस गए प्रिपरेशन में, तो फिर मजा आने लग गया। स्पेशली लव्ड फिजिक्स। जो फिजिक्स में एचसी वर्मा पढ़ते पढ़ते फिर वो 2 साल कैसे निकल गए वो पता नहीं लगा। एंड इवेंचुअली लैंडेड अप इन IIT. Correct. I remember like Vishu was my batchmate in computer science. Yeah, हाँ, yes. सही है So सही है। we know each other from childhood. So because of him, I got to know about something called IIT, and he also kind of
put it in my mind कि भाई कर सकते हैं, मतलब ये एग्जाम भी कर सकते हैं अपन. विशु भी अभी सिविल सर्विसेज में है, राइट? Yes, he's an IAS officer. He's posted in Tamil Nadu Kota right now. ओके, ही इज एन Yeah. आईएएस ऑफिसर. परफेक्ट यार. सही है, Yes. सही है. सो मतलब बेसिकली एक मैं ये चीज कह सकता हूँ कि यू गॉट टू नो अबाउट आईआईटी जस्ट बाय चांस, राइट? Yeah, है ना? I mean, I don't have any background of remotely anyone being an engineer also in my family. So, मतलब, it was kind of a discovery of a sort in my 10th class. And, ओके. just because I liked math, liked logic, I liked common sense, तो फिर हो गया फिर. हाँ, परफेक्ट. सही Yes. है. सो अब आईआईटी क्लियर कर लिया, राइट? एंड देन यू लाइक वेंट टू आईआईटी. व्हाट वाज योर ब्रांच इन आईआईटी? Chemical engineering was my branch. I did my BTech and MTech. So it was a dual degree course. ड्यूअल डिग्री कोर्स 5 इयर्स का कोर्स होता है दोस्तों. सो बेसिकली आईआईटी के अंदर बीटेक कोर्स होते हैं, डुअल डिग्री कोर्सेज होते हैं 4 ईयर एंड 5 ईयर. सो हिज कोर्स वाज इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री. सो ही इज बीटेक प्लस एमटेक. ठीक है. Yeah. सो लेट्स टॉक अबाउट योर आईआईटी लाइफ, है ना? सो यू वर इन आईआईटी, है ना? कौन सा हॉस्टल? हॉस्टल 4, राइट? 4, yes. यस. Legendary hostel. यस, तो हॉस्टल 4 पे दोस्तों छिछोरे मूवी बनी है, आप लोगों ने देखी होगी. ठीक है. एंड जो स्पोर्ट्स जीसी होता है ना, मतलब आई डिस्टिंक्टली रिमेम्बर, मैं फर्स्ट ईयर में हॉस्टल 3 में था. ठीक है. तो मतलब हम लोग को बताते थे सीनियर लोग कि हॉस्टल 3 और हॉस्टल 4 की राइवलरी है. देन हॉस्टल 4 काफी ज्यादा, मतलब हमारे टाइम पे तो बहुत ही एक्टिव था, और मतलब पैफ वगैरह में भी मचाते थे, सब जगह मचाते थे. सो लाइक व्हाट वाज योर इन्वॉल्वमेंट इन द हॉस्टल एंड लाइक इन जनरल योर आईआईटी लाइफ? तो आईआईटी लाइफ में, हॉस्टल लाइफ में, आई प्लेड लॉट ऑफ स्पोर्ट्स. तो हर, इनफैक्ट इंटर हॉस्टल जीसी टूर्नामेंट में तो हर स्पोर्ट्स में ही पार्ट लिया है. बट मेनली आई प्लेड हॉकी. So as part of IIT Bombay hockey team, and I played inter IIT for almost, I mean, every year, right from my first year. So it was a great experience. IIT Bombay का, इनफैक्ट ऑल IITs का ये बहुत अच्छा चीज है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बहुत ही तगड़े हैं. मतलब you obviously study a lot and you end up being a good engineer, but most importantly you tend to develop your overall personality a lot. So I have many of my friends have gotten into dance. Some of them have gotten into acting, and they have gone on to do very well. In fact, some of them have even gone into a professional life, into that particular thing. So I picked up sports because I have played sports my life. So I used to play a lot of hockey, and inter-hostel competitions were a great place. There was a lot of competition. There was a lot of Josh involved in playing all the sports. There was, in fact, intense. I remember there used to be intense rivalry between H4 and H3. Yes. And there used to be a fight for inter hostel general championship between these two hostels, and it was a fantastic period. I mean, I loved the extracurricular activities. I used to wait for 5 o'clock time when all the lab work used to get over, and I used to run to the hockey field and play with my teammates. करेक्ट. तो यार मतलब इनवेरिएबली है ना, सारे जो लोग हैं जो आईआईटी से निकलते हैं, like they cherish those 4 and 5 years as perhaps the best time in their life. What is your take on it? Yes, certainly. I mean, no doubt about it. It was the best time of my life because that age is also like that, 18 to 22, where Correct. you grow up as an adult, you form your mind, you form your personality, your company kind of influences you. So I found a very great group of friends. I had a great group of teammates in my hockey team. Very good batchmates, the wingies. In fact, there is something called a wingmate concept in IIT Bombay hostels. So basically, a row of rooms which call themselves wing, and there used to be inter-wing competitions. I remember, sharing a lot of camaraderie with my wingmates. So it was the best period of my time, period of my life. Not only because I learned a lot, but I thoroughly enjoyed myself. Correct. Yeah, this is what makes like engineering colleges like IITs, like they are just way like ahead of other
like because it has a culture, right? Yes. And वो culture हम लोगों के अंदर भी आ जाता है when we move out also. So there is a certain way of living which we carry with us. और मतलब हमारे अभी जैसे मैं कोटा में हूँ, कोटा के अंदर मतलब हम लोग का आईआईटी का ग्रुप है, उसमें अराउंड 45 लोग हैं आईआईटी बॉम्बे से. So we meet and like we have so much common things, like so many common things, right? सब लोग वही हॉस्टल वाली बिल्कुल अभी भी चलती रहती है. इनफैक्ट like we had like interwing competition after IITs also in Kota. Like we play some sports or something because हम लोग के कुछ hostels मिल जाते हैं. So बढ़िया. this is वही वाली चीज है कि यार मतलब ये एक ऐसी चीज है जो बार बार हम लोग याद रखना चाहते हैं. ठीक है. So we tend to do things ऐसी. ठीक है. So अब एक क्वेश्चन जो है ना, जो सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं ना, जो आईआईटी की तैयारी करते हैं, वो ये चीज पूछते हैं कि सर आईआईटी में जाके भी पढ़ाई करनी पड़ती है क्या? सो लाइक व्हाट इज योर टेक ऑन इट? Yeah, मतलब I have been in professional life now for 7 years after getting selected into IPS. अब लोगों को एक मुझे मिसकंसेप्शन था कि भाई एक बार गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर ली तो फिर पढ़ाई भी करनी पड़ेगी. लेकिन लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, यू हैव टू स्टडी ऑलवेज. मतलब यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड ऑलवेज, एंड दैट गोज स्पेशली फॉर आईआईटी. मतलब पढ़ाई करनी पड़ती है. Just because the group of your classmates are so talented, the bar itself is set so high. So it's So why, yes. yeah. So even if you want to pass with a passing mark, passing marks, passing grade, you need to study. So in fact, I'm pretty sure that every IITian has that feeling कि भाई और थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए था. So even I had that. तो पढ़ाई करनी पड़ती है, आईआईटी में जाके पढ़ाई करनी पड़ती है. बट लेट मी टेल यू, इट्स मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल थिंग. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन डेवलप योर करियर इनटू. इट्स नॉट ओनली द बुकिश नॉलेज दैट इज इम्पोर्टेंट. इनफैक्ट ये जो अभी पिक्चर ये जो फोटो जो लगा है अभी स्क्रीन के ऊपर, आई थिंक दैट्स अ सैटेलाइट, राइट? Yes. Yes. So these are the group of people who have developed probably a satellite, and they have worked really hard. They have applied Correct. their knowledge that they Like have we have learned clubs in their like that, है classes. ना? हम लोग के clubs होते Yes. थे. They used to develop these things. Yes. In fact, I remember कि IIT बॉम्बे ने पहला प्रथम satellite launch किया. Pratham, yes, and The that name is was why Pratham. that is why it was named as Pratham, because Yes. it was the first one. Yes. Yeah. So पढ़ाई करनी पड़ती है, but it's more of a practical kind of knowledge that you gain. And yeah, so that's the answer. You have to study. Yeah. So yes, correct. So that is the answer, guys. और एक और चीज मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जैसे आईआईटी के अंदर है ना, केवल जैसे सौम्य ने भी बताया, देयर आर मेनी थिंग्स टू डू, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच यू मे अवॉइड, है ना. मतलब इट इज ऑब्वियसली ऑप्शनल. जैसे अभी क्या है ना, जब मैं अभी गया था आईआईटी बॉम्बे के अंदर ही, तो लाइक मैं मेस में गया. ठीक है. अब जस्ट इमेजिन आवर टाइम्स इन मेस, राइट? बिल्कुल शोर होता रहता था, राइट? सब एक दूसरे से बात कर रहे हैं. मैं अभी गया ना, सब लोग अपने फोन पे थे. है ना. मतलब बिल्कुल साइलेंस था. मतलब मैं मेस में, मैं छोटी मोटी मेस में नहीं गया था, मैं नए हॉस्टल के मेस में गया था. तो नए हॉस्टल की मेस में अराउंड 150-200 पीपल वर सिटिंग, और बिल्कुल ही नॉइज ही नहीं था. सो दैट वाज अ सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी. तो मैंने वही उसके ऊपर मैंने फिर वीडियो भी बनाया था. मैंने कहा कि यार लाइक देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच यू कैन डू आफ्टर आईआईटी आल्सो, बट मतलब like you cannot have Olympic size swimming pool, a very good hockey field, a very good cricket field, a very good football field in one campus, है ना. ये सब चीजें एक साथ बहुत मुश्किल से मिलती है, और इतने अमेजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब यूटिलाइज करना चाहिए. मैं तो बच्चों को यही चीज बोलता रहता हूँ, राइट? सो चलिए, तो अब कट टू दी जॉब लाइफ. डिड यू गो फॉर जॉब? नहीं, I didn't go for a job. I in my last year, my 5th year of my engineering, that is when we decided, me and Vishu, in fact. So Vishu at that time had only 4-year course था, बस बीटेक वाला डिग्री था, तो उसका 4 साल का ही कोर्स था. उसका नौकरी लग गया था बैंगलोर में. तो उसके साथ ऐसे डिस्कस करते करते हमने एक बार लद्दाख की ट्रिप प्लान कर ली थी. तो ऑन द वे टू लद्दाख वी डिसाइडेड कि भाई यूपीएससी करना है, लाइफ में कुछ तो अलग करना है. So I distinctly remember the journey from Kargil to Leh was the point of time when I kind of mentally decided कि भाई
I should we should do something forward, something different. यूनिफॉर्म का तो था ही क्रेज, हाँ ही सही, वही तो, यूनिफॉर्म का क्रेज तो तुम्हारा बचपन से है, करेक्ट। तो फिर हाँ, उसी में लग गए सर। सही है, सही है। सो तो लेट्स जॉब टॉक। मैंने की थी। हाँ, सो दैट इज व्हाट द रीजन इज, मतलब थोड़ा सा विशु से डिस्कशन हुआ, एंड देन यू डिसाइडेड टू टेक अप द कोर्स फॉर सर्विसेज। आई होप लाइक, मुझे इफ यू रिमेम्बर, वी मेट इन दिल्ली, यस यस, राइट? सो या मैं उस समय आईएएस की तैयारी कर रहा था, ठीक है, यस। और मेरे साथ बिल्कुल उल्टा था। मैं लद्दाख गया एंड देन आई डिसाइडेड टू ड्रॉप इट। तो मेरे साथ बिल्कुल उल्टा हुआ था। सो मैं लद्दाख गया, मैंने मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था, उसके बाद मेरा वो प्री निकला था, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं, मतलब जब मेंस का रिजल्ट आने वाला था, आया नहीं था, उस समय मैं लद्दाख गया था। तो फिर मैंने वहां पे डिसाइड किया कि यार मेरे को एजुकेशन फील्ड में जाना है, क्योंकि मैंने उस समय एजुकेशन फील्ड में मैं ट्रेनिंग कर रहा था, एंड आई रियली लाइक्ड इट। तो इट वाज दैट टाइप ऑफ मोमेंट। सो लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी व्हेन यू मूव टू दिल्ली। तो आईआईटी कोचिंग और यूपीएससी की कोचिंग में क्या डिफरेंस होता है? बहुत डिफरेंस है। इनफैक्ट आईआईटी कोचिंग, आईआईटी का पूरा सिलेबस, आईआईटी का पूरा स्ट्रक्चर जो है, someone with an analytical mind will easily grasp it. उसको पता लग जाएगा कि भाई इस पाथ पे चलना है, इस पाथ पे चलेंगे, वो स्टेप्स अपन क्लियर करेंगे, तो अपने को पता लग जाएगा कि भाई आईआईटी होना है कि नहीं होना है। जैसे एचसी वर्मा है, एचसी वर्मा हम पढ़ते थे, तो एट दैट टाइम वी न्यू कि भाई एचसी वर्मा पढ़ना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर अगर बहुत ज्यादा तुम्हारे पास टाइम है तो फिर रेस्निक हॉलीडे पढ़ो, अपना इरडो पढ़ो। तो ये अगर चीजें क्लियर कर ली है, एंड इफ यू आर एबल टू सॉल्व दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, यू गेट टू नो कि भाई आईआईटी हो जाएगा। हम्म। और आईआईटी का प्रिपरेशन, इट्स मोर ऑफ एनालिटिकल प्रिपरेशन है। द सिलेबस इज लिमिटेड। I mean, it might seem vast at this point of time to many of the students, but compared to UPSC, it's very limited. I mean, it is set within few boundaries. जैसे मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में आपको न्यूटन लॉज ही पूछेंगे, वो रैंडमली कुछ अलग सा कुछ तो पूछ नहीं लेंगे। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही वास्ट है। द सिलेबस इटसेल्फ इज डिजाइन्ड इन सच अ वे कि देयर आर मेनी ओपन एंडेड पॉइंट्स इन दैट। तो क्वेश्चन कहीं से भी किसी भी चीज का आ सकता है। तो इन द एंड दैट लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी इज देयर इन द एग्जाम। ऑल्सो आईआईटी का जो पेपर रहता है वो ऑब्जेक्टिव रहता है, तो अपने को पता लग जाता है कि भाई अपना गलत हुआ है कि सही हुआ है। हाँ, सेलेक्ट हो रहे हैं, नहीं हो रहे या हैं, तो सीधी बात है। या तो मतलब पता लग जाएगा। मतलब मुझे पता लग गया था आईआईटी एग्जाम देने के बाद, तुरंत ही शाम तक की आ गई थी। तो की आने के बाद मुझे पता लग गया कि भाई इस लेवल पे अपना रैंक आ सकता है और यहाँ यहाँ अपन जा सकते हैं करके। यूपीएससी का वैसा नहीं है। यूपीएससी इज सच अ यू नो it seems very random exam, because there are first of all three levels of exam, and the second level, which is the most important level, the mains exam, it is subjective, and it has हम्म। nine papers in it. तो वो वो पेपर देते देते ही बहुत बार बंदा थक जाता है, and if you mess up in any one of the papers, your selection is completely screwed. हाँ, you're 1 year All screwed, Yeah, your 1 year effectively. is screwed. Yeah, and also the worst thing is you don't get to know whether you have done well or you have done average or you have done really badly. It's only after the result. So हम्म। that's there. Also, the interview is very subjective. They might ask you anything. Uh, the preparation for IIT and for UPSC is extremely different. हाँ, Both are poles apart, poles poles apart. apart. Poles Yeah. apart. Yeah, you need a different analytical bend of mind for IIT, हम्म। and for UPSC also you need a little bit of analytical mind, but also you need to have that social element to your mindset in order to write effective answers. Correct. So, like in last few years, many IITians have been top rankers. Like one of our junior, Kanish Kataria, he Yes, was All correct. India rank one, Yes, right? So, yes. what do you feel makes मतलब जो IITian लोग होते हैं ना, बहुत सारी फील्ड्स के लोग भी बनते हैं, ऐसी बात नहीं है कि आईएएस आईपीएस सभी बनते हैं, बट आईआईटियंस के साथ ऐसा क्या चीज है जो लाइक काफी सारे बन जाते हैं, मतलब प्रोपोर्शन थोड़ा सा हाई है रिलेटिवली? IITians का एक एक बात ये है कि IITians normally have been clearing exams, clearing really difficult exams all their life. So most of the IITians have cleared
NTSE क्लियर किया होगा, KVPY क्लियर किया होगा, IIT ऑब्वियसली क्लियर किया ही है. आफ्टर दैट सम ऑफ देम माइट हैव क्लियर कैट और GMAT, हाँ VRE, समथिंग लाइक दैट. तो IITians को पता लग जाता है कि भाई एग्जाम का ये सिलेबस है, हाँ. क्वेश्चंस इस टाइप के आते हैं, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के वो एक फॉर्मूला सेट कर लेते हैं कि कैसे पढ़ाई करनी है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. सो वी had that very stringent approach to filtering out the information. So Correct. We there are is lot. adaptive. Yes, we in UPSC का एग्जाम की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आती है. कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, हिंदू भी पढ़ लो, फिर इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ लो, उसके बाद फिर फ्रंटियर भी पढ़ लो, हाँ और दो तीन मैगजीन पढ़ लो. तो ये पॉसिबल नहीं है. वी हाँ. फिगर्ड इट आउट कि भाई एक ही चीज पढ़ना है, उसको अच्छे से पढ़ो. डजंट मैटर व्हाट योर पॉइंट ऑफ व्यू इज, व्हाट मैटर्स इज हाउ यू कन्वे दैट पॉइंट ऑफ व्यू. सो वी फिगर्ड आउट दोस थिंग्स कि क्या अवॉइड करना है और क्या इसेंशियल है. वो फिगर आउट करने की वजह से वी वर एबल टू क्लियर द एग्जाम. Correct. ऑल्सो आई थिंक IITians टेंड टू स्टडी टुगेदर. जैसे आई स्टडीड विशु, तो उसका भी क्लियर हो गया, मेरा भी क्लियर हो गया, दोनों का सेम अटेम्प्ट में क्लियर हुआ. सो दैट हैज बीन एन एडवांटेज. एक दूसरे के साथ पढ़ाई करते हैं, वी गेट टू नो द बेंचमार्क कि भाई अपन कहाँ पे कम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे का बंदा उतना ही कैपेबल है. तो Correct. उसके साथ पढ़ते पढ़ते वो हो गया. Another हाँ. reason why IITians clear with very good rank is because they are very good in science subject. तो अगर वो साइंस ऑप्शनल ले लेंगे, मैथ्स ले लेंगे, फिजिक्स ले लेंगे, तो उनको कोई रोक नहीं पाता है. Correct. एंड दे टेंड टू स्कोर वेरी हाई. एंड देन इट डजंट दे स्कोर सो हाई कि उनको पता, उनको मैटर नहीं करता है कि भाई हिस्ट्री कितना आता है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन उधर चला भी गया तो चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो हाँ. फुल मार देते हैं. दैट इज, these are the That reasons is why IITians these are clear. the correct, correct, correct. Perfect. So like अब let's move chronologically ahead. तो अब ये भी एग्जाम क्लियर हो गया है ना, IPS का कॉल आ गया, राइट? सो व्हाट वाज, मतलब जब when you saw your name in the list, what was the first reaction of you and your parents? I believe you were with your parents at that time, right? Yeah, I was the correct. In fact, Vishu only told me कि भाई तेरा रैंक आ गया करके. He was also, he had also been selected. So it was a relief, in fact. Not not say the joy obviously was there. I was elated, but I was relieved because कि फिर से एक साल नहीं पढ़ना है करके. So to give a little bit of background, मैंने 2 अटेम्प्ट दिए थे. पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक पहुंचा था, लेकिन हुआ नहीं था फाइनली. तो सेकंड अटेम्प्ट में वही सोच रहा था कि भाई अब करना क्या है लाइफ में, फिर से एक अटेम्प्ट देना है. वो जो दुविधा बंद एक जो माइंड रहता है, उसको मैंने अवॉइड कर लिया बाय क्लियरिंग द एग्जाम, एंड दैट वाज अ बिग रिलीफ दैट आई गॉट. 2 साल Correct. की जो मेहनत है वो काम आ गई करके. And after that, obviously, there was a lot of the passion with which I had studied. When it fructified, तो काफी अच्छा लगता है. It was a great moment. Correct. Perfect. So then now let's move on to your first posting. Where was it? After, like, So training happens in Hyderabad, right? yeah, training happens in Hyderabad, but training has 2 segments into it. First, phase 1 and phase 2. Phase 1 is the training that happens in Hyderabad. उसके पहले एक फाउंडेशन कोर्स भी होता है मसूरी में, where all the services together attend a 3-month course in National Academy of Administration, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration in Mussoorie. So I had gone there, and after that you join the National Police Academy in Hyderabad. That is a phase 1. That is for 10 months, where they make you an IPS officer. They train you in the drill, they train you in the weaponry, they teach you laws, they teach you IPC, CRPC, everything. They teach you police procedures, and many other subjects are there. And after that, you go for phase 2. Phase 2 is when you get the district practical training, where you are sent to a district, and you are there for 6 months, where you hold a independent charge for 3 months in a particular police station. So police station का इंचार्ज हमें बना देते 3 महीने के लिए कि भाई तुम ही हैंडल करो करके. और उसके बाद फिर we come back to the academy for debriefing, and we go for the first posting after that. So my first posting was as a probationer, as a trainee. I was in Aurangabad district, and as my first posting,
the actual posting, I was in Amravati district as assistant SP. Okay, ASP. Yeah. Okay. Yeah. So currently, guys, मैं आप लोगों को बता दूं. So Soumya is now SP in and posted in Latur. Yeah. ठीक है. So अगर आप लोग लाटूर के एरिया में हैं और कुछ आईआईटी की टिप्स चाहिए, so you can always visit Yeah. Most welcome. you all can always visit SP of Latur. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. Always परफेक्ट welcome. परफेक्ट. सो अब उस सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका इंतजार जो पूरी ऑडियंस है ना वो कर रही थी कि लाइक व्हाट वाज दैट इंसिडेंट व्हिच रिजल्टेड इन द शौर्य चक्र पुरस्कार. Okay, so the detailed citation is already there on the net if anyone wants to check it out, what really happened in the incident. So to give you a background, I was posted in Gadchiroli district. Gadchiroli is the easternmost district of Maharashtra, and it is Naxal affected for last 40 years. 1982 में वहाँ पे नक्सलवाद स्टार्ट हुआ था जब तेलंगाना में स्टार्ट हुआ था. So Gadchiroli is a district which shares its border with Telangana, erstwhile Andhra Pradesh, then Chhattisgarh. तो ये तीन स्टेट जो है ये एक साथ आते हैं गढ़चिरौली में, एंड इट्स अ हिली एरिया कंप्लीटली फॉरेस्टेड. 80% of the district is under dense forest cover. In fact, Gadchiroli is part of the geographical area called Dandakaranya, जो रामायण में जो था ना दंडकारण्य की, जहाँ पे किसी को पनिशमेंट देनी है तो वहां पे भेजते थे, वैसे टाइप का वो काइंड ऑफ वो एरिया है, पार्ट ऑफ दंडकारण्य एरिया. So I was posted to Gadchiroli as additional SP, and I was there for 2 years, during which I was head of operations, Naxal operations there. As part of Naxal operations, as in charge of Naxal operations, I had a force under me which was called Commando 360. It's a specialized anti-Naxal force of Gadchiroli police, comprised of commandos. तो दो जो जवान मेरे साथ अवार्ड के लिए गए थे, who were also awarded with the Shaurya Chakra. They are part of C60 force, the C60 commandos. So I was in charge of the overall commander of C60, and with that force we used to launch lots of operations, and in important operations I used to be the tactical commander, not only in the planning but also on the ground. We used to go. So this incident, happened on 13th, 13th November 2021. We got information that there is one particular area in which Naxals have camped. That area was on the border of Maharashtra and Chhattisgarh. The Naxals tend to operate on the border areas of states because it's easier for them to operate, because they can take the advantage of jurisdiction of different states. So basically, हमने अगर इधर से पुश किया तो फिर वो छत्तीसगढ़ में भाग जाएंगे, उनको पता है कि महाराष्ट्र पुलिस छत्तीसगढ़ में जाएगी नहीं, और फिर अगर छत्तीसगढ़ से पुश किया तो महाराष्ट्र में आ जाएंगे. ऐसा उनका दिस नक्सल्स लव दिस पर्टिकुलर टेरेन, दिस पर्टिकुलर पॉलिटिकल डिमार्केशन. तो उस बॉर्डर एरिया पे कैंपिंग है करके हमें इंफॉर्मेशन मिली थी, एंड वी लॉन्च्ड एन ऑपरेशन ड्यूरिंग नाइट. So we always launch operation during night because element of surprise is very important in Naxal operation, in any operations in fact, because you have to reach that place before they become alert. So we launched the operation at night. We got dropped from the particular site, roughly 10 kilometers from the site. We dropped by means we went by vehicle till 10 kilometers. And the rest of the 10 kilometers, we traveled by foot because, again, in order to avoid, them getting to know that police is coming. So we traveled by foot, and we started covering the area. We surrounded the place, and at that time they started the firing. Whenever these Naxals camp, they have sentries posted all around their campsite. Those sentries started firing, and the firing started at roughly 6:10 in the morning. We always start assault in the morning in the first light, because night में पता नहीं लगता. Even though we have night vision goggles, you don't really know कि भाई आगे का बंदा कौन है. So especially in a dense jungle, it's very important to know कि भाई कौन अपने ऊपर फायर कर रहा है. It can be one of the jawans also. It can be
there are lots of shikaris who roam around in these jungles. So these villagers have their Bharmar rifles. Every villager has a rifle because they are basically hunters and gatherers. तो छोटे मोटे उनके पास राइफल रहते हैं एंड उसको लेके वो शिकार के लिए जाते हैं. तो बहुत बार वो भी आ सकते हैं अपने सामने. We always start the assault in the morning. So in the first night we started and the sentry started firing. At that time firing started. It was a heavy fire. One of my guys was injured in the very first instance. He had a bullet injury to his head, and we were very demoralized with that. But we kept on fighting there because we wanted to clear the area. So at that time, roughly it was 8 o'clock that they had the first injury, and the firing continued till 4:30 in the evening. By that time, two of my boys had bullet wounds. One was shot in the head, another had a bullet injury to his hand and his shoulder. He was shot twice. And many of my boys had leg fracture, hand fracture, and many other things. So when we searched the area at the end of firing, we realized that it was a huge camp. Roughly 100 to 120 Naxals were camping there. And we found 26 Naxals there, among whom was the head of Maharashtra, जिसको महाराष्ट्र का पूरा जवाबदारी दिया है का. अच्छा. महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का जवाबदारी जिसको दिया है, वो जो नक्सलाइट था, जो नक्सल लीडर था, वो भी वहां पे था, वो भी मारा गया उसमें. Along with that, 25 other people, other Naxalites were killed. All of them, had weapons. We were able to recover 29 weapons. Many of them were automatic weapons. There were 6 AK-47, a few other weapons that many people may not know their names, but there were many weapons that we recovered there. And it was a firefight that went on till almost 10 hours, right from 6 o'clock to evening 4:30. At that time, the most important thing is to get out of that area, because we were able to get 26 bodies, but we knew for a fact that they're looking at the camp, that there are more than 100 Naxals there, and they were going to sit in ambush because they know that these guys are going to go back to a particular place, to a particular police station nearby. So वो उस रास्ते पे ambush में बैठ जाता है. बहुत बार वहाँ पे ID लगा देते हैं उस रास्ते पे ही. So we needed to get out of there before these guys regrouped. Also, I had so many injured men with me. We had to take them out. So we called for a helicopter and we sent them. We evacuated the injured, and we got back the bodies, the weapons, and whatever Naxal things that we could gather in that meantime. And roughly around, we had to walk 14 kilometers after that to get to the nearest post. And we got back to the post around 2 o'clock, 3 o'clock in the night. And eventually we found out that both the men who were shot survived, and they were doing very well. In fact, they are very well. They were the ones who received award along with me. Okay, perfect. So basically, no casualties, like for us, right? No permanent casualties. Yeah. Okay, okay, perfect. One of the guys who was shot, he is still not able to use his hand. Okay. But हो जाएगा, मतलब reconstruction surgeries और वो सब कुछ करके will be fine. Okay. So like this is like this is also one of the once in a lifetime type का experience. मतलब for a layman like me, it sounds like very, मतलब मुझे तो बहुत ही खतरनाक sound किया, obviously, for a layman like me, and I think like the audience will also understand the sensitivity of the incident and the courage which has been shown by the men on the ground, and obviously their leader Somay. So like you were the in charge at that point, right? I was the tactical commander on the spot at that time. So normally additional SPs go only for important operations, and because we realized कि भाई यहाँ पे कुछ तो बड़ा कुछ तो चल रहा है. And unless you go on the offensive, if you allow them to stay for long, they'll plan something sinister against the security force. Obviously, like 100, 120 people, if they were there,
Yeah. I think they came up with a very big plan. Yeah, they had come up with a very plan. In fact, yeah, in that particular area, they were able to kill one SP, the SP of Rajnandgaon in 2009. Okay. These same guys, and they had killed SP. Along with him, they had killed 25 other policemen because they wanted to target very senior leader. So Yes. that so we need to drive them out. Hmm. We, in that order we launched that operation. Okay. 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 Perfect. So, guys, this was the incident, right? And obviously, it was reported hugely in the media also. And jab last year the news came out, I also made a shot. And उस समय मतलब हम लोगों की कुछ मतलब इंटेलिजेंसेस थे जिस वजह से हम लोग ये सेशन नहीं कर पाए, ठीक है। तो बट नाउ वी आर हेयर एंड सौम्य हैज एनलाइटेंड अस विद अस। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइस यार, मतलब जब आप आईआईटी करते हो, आईआईटी के बाद बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। सो सिविल सर्विसेज इज वन सच ऑप्शन विच इज लाइक वेरी वेरी फुलफिलिंग इन टर्म्स ऑफ कि यार आपको देश के लिए कुछ करना है। एंड लाइक आईपीएस, आई स्टिल रिमेम्बर जो मेरा जो वो था ना, डैफ होता था, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जो प्रीलिम्स के बाद भरते हैं, राइट। तो आई आई रोट आईपीएस एज द फर्स्ट चॉइस, उसमें ऐसे लिखता है ना। तो आई ऑल्सो वांटेड टू बिकम, अगर मैं करता तो मेरी पहली चॉइस आईपीएस थी, मतलब मैंने आईपीएस भरा था, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली, कि यू गेट टू बी इन लाइव एक्शन, लाइक मतलब जो उसमें, बिकॉज आई थिंक इट्स अ स्पेशलिस्ट जॉब, राइट, Yeah, है ना। yeah, So like yeah, IAS is considered as a generalist job, a yeah, generalist yeah, thing. It is yes, a yeah, specialist thing. So that is why my preference was, at that point of time, was also like IPS. So Soumya, it was a very very nice interaction. Ab end mein Aaron, I would like if you can share some message to students, because like these are those students who are in the age group of 14 to 18, right? yeah. So like what they can take away from this interaction, or like what should they aim for basically when they are going to any college or IIT maybe? So I think my message to students will be to find their passion and be true to it and be true to yourself. That is very important. Many times we end up in order to fool others, we end up fooling ourselves. We tend to sit with a book for 6 hours, 8 hours, and pretend to study. But we also know, you also know, sometimes we also did that. We didn't really study at that time. We just whiled away our time. Or any project that you take up, you need to be true to yourself. Correct. That you need to, when you are true to yourself, you'll realize that what you want to do, you'll realize, and how to do it, you will realize. And you, because you're true to yourself, you'll be working hard against all the odds, and you won't require any supervision. You will find your path. So Correct. Correct. that is very important. When you will be true to yourself, you won't really need any coaching also, क्योंकि भाई जिसको पता है कि भाई ये करना है, जिसने Hmm. ठान लिया है कि भाई इसको करना है, तो फिर वो किसी ना किसी तरह से वो रास्ता निकाल लेता है. एंड आई हैव सीन दैट happen with many of my colleagues, my friends, who have against all the odds, they were able to clear exams. In UPSC, in fact, in UPSC, uh, I got to interact with people who come from a local language background. तो मतलब IIT में बहुत बार ऐसा कम दिखने को मिलेगा कि भाई किसी को इंग्लिश नहीं आती है. हाँ. लेकिन लेकिन यूपीएससी में मेरे कुछ आईपीएस बैचमेट्स थे जिनको इतना अच्छे से नहीं आता था, बट आई रियलाइज कि बिकॉज दे वर ट्रू टू देमसेल्व्स, दे न्यू कि भाई दिस इज देयर स्ट्रेंथ. उनको Hmm. पता है कि भाई वी आर कॉन्फिडेंट इन हिंदी, तो वो हिंदी में इतना अच्छे से बात करते थे, इतना अच्छे से कन्वे करते थे कि दे डिडंट रियली रिक्वायर any other medium to communicate. So point is, be true to yourself, and you will find your path, you'll find your. So all the best to all the students. And Yeah. Thank you. this Thank is a you. very important age, 14 to 18, Hmm. in which you can do many great things. It will decide the rest of your life. So study hard for it, for whatever you choose. Yes. Perfect, guys. So I hope, like, guys, you
यू हैव हर्ड दिस इंटरेक्शन फुल्ली. आप लोग के कोई भी अगर कुछ क्वेरीज है तो आप लोग लिख सकते हैं. ठीक है. ऑब्वियसली सौम्य इज वेरी बिजी, but I will try to send some of your queries to him. If he can answer to those queries, I will be from your end also. Once again, from the students' part, I would like to congratulate again Soumya you, Yeah, thank you. for Thank you this so much. amazing honor. And believe me, when you got this honor, मतलब मैंने उसकी स्क्रीनशॉट को अपने स्टेटस पे लगाया था. ठीक है. और मेरा टेलीग्राम कम्युनिटी है जिस पे अराउंड 14-15 थाउजेंड स्टूडेंट्स हैं. वहां पे मैंने उसको शेयर किया था. मैं तो ये मानता हूँ कि अगर हमारे बैच से कोई अगर जैसे यूनिकॉर्न बन रहा है जैसे नीरज है, तो मैं तो मानता हूँ मैं भी यूनिकॉर्न बन गया. एंड लाइक यू हैव गॉट दिस अवार्ड, सो इट इज एन ऑनर फॉर मी एज वेल. बिकॉज मतलब हम लोगों ने साथ में एक बैच के अंदर पढ़ाई की है. राइट. सब लोग अपना कुछ पार्ट प्ले कर रहे हैं. राइट. मतलब यू आर प्लेइंग योर पार्ट, somebody Right. else is playing their part, I am playing my part, everybody is playing their part in taking this great nation forward, which Yes. is the most important thing, I feel. Right. Thank you so much, sir. Thank you Yeah, so much for thank you. giving me this opportunity. It was Yeah, great talking to you. yeah. Thank you.